Hello, my dear students. Growth is painful, change is painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong to. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन एंड इस सेशन में हम लोग स्ट्रिंग के साथ आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी लाइक इन प्रोग्रामिंग हाउ टू गो ऑन एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स as well as how to go on displaying the strings. In previous session we have seen like what are the strings, उसके representation क्या है, उसके basic aspects क्या है. Now यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से ये पता करने वाले हैं what are the different ways of accepting strings and displaying the strings. So let's move into the coding directly. वहां पे discussion करेंगे what are the different facilities that are given to us by Dennis Ritchie in C programming for acceptance of strings and displaying the strings. So let's move into the VS Code. So as usual, we'll be creating the file inside this, a new file, and I'll mention this as string1.c, right? Okay, and यहाँ पे what I'll do is form.c को copy करके यहाँ पे string1.c में paste कर लेते हैं, right? Okay, now we know that strings are represented with the arrays of character. तो यहाँ पे पहले एक array of character को declare कर लेते हैं, right? So I'll go with character, उसको नाम देते हैं name. And यहाँ पे I'll just keep this as what 15, right? So name is a variable of type character array and it consists of 15 characters inside it. अगर हम लोगों ने इसको initialize नहीं किया तो it holds garbage values that we know, right? It all goes with the basics of arrays. Now let us try to understand कि what are the different ways for accepting string. So सबसे पहले aspect हम लोगों को check करना है कि as I said in the previous slot also, यहाँ पे भी बोलूंगा और आगे के string के सारे सेशन में भी यही बात करूंगा कि string is considered as a very special entity in each and every programming language. So Dennis Ritchie has given one format specifier for representations of the strings. So that is what %s. So what are these format specifier? Are we aware of format specifier? Yes. इसके पहले हम लोगों ने देखा %c is for character, %d is for digits or decimal, %f is for what? Floats. इसके बाद देखा %u unsigned, and then we have seen %ld. %ld is for long decimal. Then we have seen %lf for double and capital LF is for long double. So many format specifier to display the values, to go on accepting the values that we know these are available into the C programming. उसी तरीके से अपने पास और एक format specifier है जो dedicated है for what? Strings. So let's go on using this format specifier and check out कि are we be able to accept the string with this and display the string with this. So that will be the first way to look into acceptance and display of string. So let's check how this works. And here I'll go with user को prompt करेंगे something like this. Enter your name. And यहाँ पे scanf करेंगे, accept it in string format and store it at what? Address of name, right? Okay. Now in this case यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखते हैं कि address of name मतलब इसके पहले enter any number and then we have seen like accept it in digit format and store it at address of what? That number variable, right? तो यहाँ पे one basic idea about the string is whenever we go with name of the array, ये identity आपको ध्यान में रखना है. Name of the array is always its base address. Name of the array is always its what? Base address. किसी भी array का C++ में the name is equal to its what? Base address. So यहाँ पे अगर आप ये address ampersand दे नहीं पाते हो, then also it goes on working with respect to what? This acceptance of the string. So let's remove that ampersand and check it,
right? So यहाँ पे, and I'll go with accept it in string format and store it into the name, right? Now we'll say printf, and जो accept किया है वो name हम लोग display करेंगे, and you entered your name as, right? Okay, as what? %s, and कहाँ पे है वो name? Name नाम के array में है, right? So let's go on checking by executing this. And it says that enter your name, and यहाँ पे let me go on entering my name, that is Prasad, and when I hit the enter key, I'll be able to see that you entered your name as what? Prasad. So this is the first way, and specifically क्या है अपने पास? %s for working across string, a special dedicated format specifier for accepting and displaying what? String. This is one way. Now next one is, let's go on checking what is another way. Another way is we have two functions. One function is named as getS, right? तो अभी ये get function क्या बता रहा है? This get function says to you that you are able to accept a character. वैसे ही getS function is going to tell you that it is going to accept what? String. And इसका counterpart है, that is what? PutS. So getS से हम लोग string को accept कर पाएंगे, and PutS से हम लोग string को display कर पाएंगे. So let us try to understand how we can do it. This will be a second way to accept the string and display the string. So, and yeah. So let's go on trying to accept it with the help of getS and PutS. So what I'll do is I'll just comment on these lines. In lines को comment करते हैं, and we'll go with, let us say printf, and I'll say enter your name, right? Okay, and then I'll go with getS, get a string and put it into name as a variable or character array, and उसके बाद puts से मुझे उसको print करना है. So I'll say you entered name as, right? Okay, and यहाँ पे we'll go with puts and name, right? So now let's see like how this getS and puts is working for us, right? Okay, so when I run this, please observe यहाँ पे enter your name, and this time I'm saying n infinity, right? And it says that you entered the name as n infinity. So this is the second way of accepting the string with the help of which function? getS, and displaying the string with the help of what? PutS. As we know that a string is a array of characters, तो उस हिसाब से भी हम लोग instead of using PutS और %s, अरे के साथ जो भी फंडामेंटल्स हम लोगों ने यूज किए वो यूज करके इस स्ट्रिंग को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं. सो लेट्स मूव इनटू दैट डिटेलिंग्स आल्सो, राइट? ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया विद द हेल्प ऑफ गेटS, राइट? ओके, गेटS से जो भी स्ट्रिंग हम लोगों ने एक्सेप्ट किया उसका पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो आई विल गो विद इंटीजर लेंथ, and we know that there is a function known as strlen of name, right? Okay, so name में जो भी string है उसका length calculate करके length नाम के variable में store करेंगे, and then I'll be using a loop to go on printing the characters of the string. So in this case loop कैसे चलेगा? For I is equal to 0, I must be less than क्या? Length, and what? I plus plus, right? Okay, इसको और अगर डाइसेक्ट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग भी लिखता हूँ. लेट अस से दैट आई एम स्टोरिंग PRASAD, एंड एंड में क्या है? नल कैरेक्टर, राइट? ओके, सो ध्यान से देखना है 0 1 2 3 4 5 and 6, right? Okay, and name will be the variable name.
राइट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग? सो यहाँ पे लेंथ में आएगा व्हाट वैल्यू? द वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 6. सो 0 से लेके ये चलेगा लेस देन लेंथ तक, मतलब 5 तक. सो 0 1 2 3 4 एंड 5 यहां तक, राइट. एंड वी नो दैट हाउ टू गो ऑन प्रिंटिंग. सो मुझे इस अरे का इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट करना है, देखो, राइट. सो कैसे करेंगे? प्रिंट एफ इंडिविजुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %c and I'll say print as name of I. All the basics of character array handling that we have seen over here, right? So length को कैलकुलेट करेंगे एंड उस लेंथ को यूज करके यहाँ पे ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेंगे. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि इस वे से भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं या नहीं, राइट? ओके. So what I'll do over here is printf and चलेंगे you entered name as and यहाँ पे I just want to go on using this loop. So इसके लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे integer length and next to that I'll go with integer I for traveling or as a loop variable, right? Okay, so यहाँ पे आते हैं and the moment I go with length is equal to str len, right? Okay, and यहाँ पे name. So now if I go with this, I need to go on using one more include type, and that is include what? String dot h, right? Okay. So and now let's see. पहले चेक करते हैं कि str अपने लिए काम कर रहा है या नहीं. So what we'll do is printf and यहाँ पे length of string is %d and कॉमा करके हम लोग लेंथ को डिस्प्ले करेंगे, राइट? ओके. सो व्हाट आई विल डू इज इस अरे को प्रिंट करने से पहले हम लोग पहले लेंथ को प्रिंट करते हैं, राइट? ओके. एंड लेट्स सी नाउ हाउ दिस वर्क्स. Here I'll go on executing it again and here I'll mention Prasad, right? Huh. So you entered name as Prasad and length of the string is 6. So we know that how this strlen is working and now we got the length in the variable named as length, right? Okay, अभी for loop use करेंगे and फिर इस string को display करेंगे, right? Okay, so let's see. यहाँ पे I'll go with for loop. कैसे करेंगे for loop के साथ? So here I का value indexing for the array always begins with 0. Indexing for the array always begins with 0. Then I must be less than length and then I plus plus. And then we'll simply go with printf. हर कैरेक्टर को प्रिंट करते जाओ. कहां पे है वो? नेम ऑफ I के अंदर है, right? Okay. So this is the way through which we can go on printing what? The name on the console. So let's go on checking. And here I'll go with, let us say, n infinity. So it says length of the string is 9 and you entered the name as what? N infinity, right? One more way से हम लोग ट्राई करेंगे प्रिंट करने का. सपोज अपने पास ये फंक्शन है ही नहीं. कौन सा? लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन है ही नहीं, ऐसा कंसिडर करते हैं. वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. देन उस केस में कैन वी गो ऑन प्रिंटिंग द स्ट्रिंग? सो उसके बारे में सोचते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. पहले लॉजिक के साथ बात करेंगे एंड देन विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम लॉजिक विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कोडिंग, राइट? So we know that this particular array is stored over here. Let us say again the same thing. Prasad ended with what? A null character. Right. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the indices and name of the variable itself is what? Name. So now हम लोगों को लेंथ पता नहीं, ऐसा जूम करो, राइट? वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग दिस str लेंथ. तो उस केस में फिर स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करेंगे? एंड यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करते जाना है हर कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टिल वी रीच टू व्हाट? नल कैरेक्टर.
So do you agree that I का वैल्यू लेंगे, सबसे पहले इंडेक्सिंग विल बी 0 एंड हम लोग ऐसे करेंगे जब तक वाला लूप वाइल नेम ऑफ आई is not equal to what? A null character. जब तक ये null character नहीं होता है name of I, तब तक इसको प्रिंट करते जाओ. So क्या प्रिंट करना है? So we'll go with printf and what? %c and then we'll print here name of I. एंड उसके बाद सिंपली यहां पे करेंगे I प्लस प्लस. सो I का वैल्यू 0 है. I का वैल्यू 0, नेम ऑफ 0 p इज इट नल? नो. तो ये अंदर आएगा एंड दिस विल प्रिंट व्हाट? p. I plus plus, I becomes 1. Name of 1 is R. Is it null? No. It will come inside, will print the character that is R. I plus plus, it becomes 2. Name of 2 is A. Is it null? No. It will come inside and it will print what? A. ऐसे ही ये बनेगा 3, 4 and 5. The moment it goes to the 6, name of 6 is null, is not equal to null, ये condition false होगा, it will come out of this loop. And this is the another way. Though we don't know the length of the string, still we can go on printing the entire string by checking this is as a null character, right? So let's see like how we can go on implementing this with the help of this methodology also. And यहाँ पे आएंगे and so here we'll go with one more time printing, that is printf, and we'll say you entered name as, एंड यहाँ पे आई वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे कैसे? 0 से. एंड जब तक मतलब वाइल लूप, जब तक नेम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 0. कैसे लिखते हैं इसको? सिंगल कोट्स में \0, राइट? हाँ, जब तक ये नल कैरेक्टर नहीं होता है तब तक उस कैरेक्टर को प्रिंट करो %c से एंड व्हाट इज इट? नेम ऑफ आई. एंड देन सिंपली गो ऑन incrementing the index value so that you can reach to what? The next character, right? So इसके साथ let's go on checking कि ये loop अपने लिए help कर रहा है क्या नहीं इस string को print करने के लिए, जब हमको string का length पता नहीं है. So let's see, let me run the code and check it out. I'll just remove this out of this. Yes. यहाँ पे I'll go with, let us say, success. And please see, हाँ, पहला वाला जो सक्सेस था वो पुटेस से प्रिंट हुआ है. देन वी प्रिंटेड द लेंथ, उस लेंथ को यूज करके फिर हम लोगों ने सक्सेस प्रिंट किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? दिस फॉर लूप. एंड उसके बाद though we don't know the length of the string, still we can be able to print it with the help of while loop. but इस while loop में हमने चेक किया कि string का terminating character. यहाँ पे और एक बार प्रूव हुआ कि string के end में सही में कौन सा कैरेक्टर है? null character है. So string is an array of character ended with a special symbol known as what? null character. So इस कोड में इतना ही रखते हैं जहां पे हम लोगों ने देखा various ways of accepting the strings and displaying the strings, right? कोड को जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. अगर कुछ एरर आता है तो प्लीज सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप and I'll come up with error resolution very immediately, right? So keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.